6:30 वाली क्लास थी ना, तो ऑन करना था भाई, फोन से करी अभी ना तो। Hello, am I audible? Prabha, can you text everybody? Did you also face the login problem today? Which date you haven't received, Chetan? Yes, sir. For which date you haven't received the notes? On 9th of October. On 9th of October, there was no class. I think on 7th of October, I had one.
14th October, I had given Sir, another one. I have received mail on 9 October. Okay, then which dates, notes you are looking for? कौन सी डेट का नोट आप ढूंढ रहे हो? I think, sir, from 2 to 3 classes, 2 या 3 क्लास का मिला not अभी तक receiving. आपको? अच्छा, 2 या 3 नहीं, क्लास के ही नोट्स? 2 या 3 क्लास से नहीं मिले. अच्छा, जिस जिस क्लास का नहीं मिला है उसका आप डेट शेयर कीजिए. ओके सर. ठीक है, उसका आप मुझे डेट दीजिए, फिर उसको आप अपना ईमेल आईडी दे देना, मैं आपको डायरेक्टली भी भेज दूंगा, नहीं तो मैं विशाल को बोल दूंगा. ओके सर. NIRC में मैं बैठ. ईमेल आईडी डाल देता हूँ सर. हाँ, ईमेल आईडी मेरे को दे दीजिए, और साथ में विशाल का ओके ईमेल आईडी मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, NIRC वाला, स्टूडेंट वाला, उसमें आप डालिए. ठीक है. ओके आप लोगों को भी कुछ लॉगिन का प्रॉब्लम हो रहा था आज? नो. Okay, because I could see some login problems, today. Anyway, so let's do one thing. Let's start with this. ठीक है, अभी शुरू करते हैं. आप मुझको डेट देना, फिर उसमें शेयर कर देंगे. Okay? ओके सर. You can see my screen. Yes sir. Okay, let's start. See, in last class we discussed about performance measurement and analysis, which is basically more related to our topic, that is management reporting issues under cost audit. So that's very important, because as the part of the cost audit report, cost auditor need to perform certain analysis and then report on that to the management about the company's operations. It may be related to the efficiencies, कि material efficiency कैसा है, कहाँ expenses ज़्यादा है, where the profitability is going down, what are the factors which are impacting it. So there are the different type of analysis we discussed last time. So हमने उसमें से दो analysis discuss किए थे. So we'll continue with that. I think in last class जो reporting performance analysis में, see, it's very important part that what a cost auditor need to analyze. When we talk about cost and management audit, so during this audit, what a cost auditor need to do is to have the complete knowledge of the standard, and then to apply that knowledge for the purpose of analysis. The analysis to understand how the cost accounts are maintained vis-a-vis our cost accounting standard, and then also to see here the cost auditor is not only supposed to check the compliance with respect to standard, कि standard में जो बोला वो record बनाए नहीं बनाए. The cost audit is much more beyond this, जैसा आपने पहली क्लास में डिस्कस किया था, that the cost auditor need to check the compliances, not only the compliances but also related to the usage of resources. The resources should be analyzed, should be used in a most effective manner, and then because this impacts the productivity of the organization also and profitability. So the entire performance analysis are towards achieving the main bigger picture. Now what is that? To meet the profitability of the organization, efficient use of resources. Now these resources are not only material but also the manpower, but also machine, but about the assets. So the entire focus is about that. So hence जब ये परफॉर्मेंस एनालिसिस करने हैं कॉस्ट ऑडिटर को, तो उसको क्या क्या करना है? अभी हमने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था? इट विल बी अ एनालिसिस अबाउट द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. अब हमने उसमें डिस्कस किया था, वी डिस्कस लास्ट टाइम, कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में क्या क्या पॉइंट उनको कवर करने. प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी एनालिसिस हमने ये डिस्कस किया था कि प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी एनालिसिस में उसको किस तरीके से एनालिसिस करेगा, एंड व्हाट कुड बी द टॉपिक्स. Now few more topics we'll cover today are related to utility and energy efficiency analysis. Now also key cost and contribution analysis, product and service profitability analysis, market customer service profitability analysis. Now when we talk about utility and energy, हमने पहली क्लास में we discussed in the previous class what we mean by utility and energy.
is related to my electricity, fuel, power, all these gas, steam, whatever is used for the production. It's cost reduction because this is related to the efficient use of resources. Now my resources are my utilities as well. Okay, so key cost and contribution. अब मेरी की कॉस्ट कौन कौन सी है? मेरा मटेरियल, लेबर, माय वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, एंड देन कंट्रीब्यूशन एनालिसिस, मेरे को किससे क्या मिल रहा है, व्हाट आर द रेट ऑफ रिटर्न्स. So this is mainly related to my financial analysis. Product and service profitability analysis. See, different type of analysis. And a cost auditor को अपनी रिपोर्ट में इन सारे एरियाज के ऊपर एक परफॉर्मेंस एनालिसिस देनी है कंपनी की. इट्स नॉट ओनली अबाउट द ऑडिट कि आपको ये कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं, ये कॉस्ट रिकॉर्ड को इस तरीके से बनाना है, इसकी क्लासिफिकेशन ये होनी चाहिए, बट इट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स द परफॉर्मेंस एनालिसिस. द परफॉर्मेंस एनालिसिस कहाँ कहाँ जाएंगे, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, रिलेटेड टू माई आवर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, प्रोडक्टिविटी, यूटिलिटी एंड एनर्जीज, की कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन एनालिसिस, जो कि हमारा मेनली क्या है, फाइनेंशियल एनालिसिस. इसमें हम रेशियोज डिस्कस करेंगे, रेट ऑफ रिटर्न होगा. नाउ समथिंग रिलेटेड टू माय ग्रॉस प्रॉफिट, sales turnover ratio. These are the different type of ratio. Liquidity ratio, कि कंपनी की लिक्विडिटी कैसी है. Is company in a position to meet its short-term financial commitments? Product and service profitability analysis. Now, what does this mean? It means those type of analysis which are related to, it's not only a company may be making more than one type of products, okay, or maybe performing different type of services. So it talks about different type of product wise analysis. Which product is contributing how much for the profitability, which product should be discontinued, should a company what type of product company should focus upon, what type of resources are being used for a particular type of product, what are the key resources. So that kind of analysis will talk about क्या क्या एक ऑडिटर को एनालिसिस में क्या क्या कवर करना चाहिए. Now what all should be included in analysis, what are the key aspects, कौन कौन से key aspects हैं जिसके ऊपर फोकस करना है एनालिसिस करते टाइम. See, it's basically about the crux. One is audit related to the standard, another is about the analysis of the records, about the performance of the company. Market and customer profitability analysis. कौन सी मार्केट में? Now market analysis में क्या हो सकता है हमारा? Domestic market, international market, that kind of analysis for a particular region. Customer profitability नहीं क्या होगा? We are talking about the corporate segment, we are talking about retail segment, we are talking about the customer who places the big orders, we are talking about the customer for a particular region जो छोटे छोटे orders देते हैं. So now we do a analysis on that. Working capital and inventory management analysis. Now it's what is working capital? We discuss it's a basically my short term measure. It requires to run my business operations day to day needs के लिए जो मेरी short term financial obligations है उनको meet करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, current assets चाहिए to meet my current liabilities. So working capital is basically we need to perform analysis on this. Cost auditor need to focus how the company is managing its working capital. Does the company is running out of the working capital at any point of time? What has been the position? Having excess of the working capital is also not good for the company because resources are not useful in that case. शॉर्ट टर्म बेसिस में अगर आपके पास रिसोर्सेज ज्यादा है तो उनको आप लॉन्ग टर्म बेसिस में यूज नहीं कर सकते. इन्वेंटरी मैनेजमेंट एनालिसिस. When we talk about for the inventory management, it's the bigger part of my current assets. Now inventory management analysis means what type of inventory is being managed, किस तरीके का, we'll talk about that. Manpower analysis. Now these are so the key analysis where it has to be done. Manpower analysis means कितने लोग रखे, क्या उनकी performance है, how much has been spent on training, are the people really contributing, what has been productivity, how many people are leaving the organization. Because hiring and rehiring is again a costly affair. Impact of IFRS on cost structure, cash flow and profitability. ये कुछ और चीजें हैं कि मेरे दूसरे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो क्या मेरी प्रॉफिटेबिलिटी और मेरे कैश फ्लोज के ऊपर फर्क डाल रहे हैं. सम ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आर आल्सो एप्लीकेबल. नाउ व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दैट? एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग टूल्स.
कुछ मेरे मैनेजमेंट अकाउंटिंग टूल्स जो हम लोग यूज करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग टूल्स क्या हो जाएंगे मेरे, जो अलग अलग तरीके में हम लोग एनालिसिस करते हैं. विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल. ओके, maybe when we are talking about IFRS means we will be talking about the other type of the factors. So other than these, what could be the key factor where we need to focus, like cost structure, cash flows, profitability? तो अभी हमारा उसमें रेशियो एनालिसिस में कवर होगा. What could be the other ways to analyze that? So we'll start with, as we discussed last time, we'll start with utility and energies. Now, utilities and energies, we discussed what's each one. These are used for the production, for the process of conversion. इसको material other component into finished goods. So, the क्या ये resources क्या मेरे physical unit का part होते हैं? A steam or electricity when it's being used, it doesn't constitute the part of my physical part of my asset, of my final product, finished goods. इलेक्ट्रिसिटी तो उसको कन्वर्ट करने में खत्म हो गई. इट्स नॉट मटेरियल विच यू कैन सी इन अ प्रोडक्ट. अब कल के दिन जो भी हम स्पेयर्स यूज कर रहे हैं, इफ यू आर मेकिंग टीवी, इफ यू आर मेकिंग मोबाइल फोन, सो वी कैन सी a raw material being used, but we cannot see the utilities being there. What are utilities? Utilities are used to convert my input into output. So utilities and energies are basically my substantial part of my conversion cost. अब हम यूटिलिटी एनर्जीज में क्या क्या करेंगे, जैसे मेरे जो है, अब वी डिस्कस लास्ट टाइम, पावर, स्टीम, इलेक्ट्रिसिटी, कंप्रेस्ड एयर, वाटर, व्हाटएवर वी आर यूजिंग फॉर द प्रोडक्शन पर्पस. और इनके क्या है कंजम्पशन इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इनिशिएटिव्स. The use of utilities for administrative function may be found in terms of lighting, cooling, ventilation. अब जैसे for the environment purpose में we go to an office, what may be required is that for an office, it is not only what we need to capture. वहां पे सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं है, बट वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, एक एनवायरनमेंट भी मेंटेन करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल, सम प्लेसेस, इफ दिस इज अ काइंड ऑफ द कंपनी वेयर यू नो इट्स अ फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड वेयर द मेडिकेशंस आर बीइंग प्रिजर्व्ड, तो वहां पे उनको ना टेम्परेचर मेंटेन करना होता है. और फॉर सर्टेन प्रोडक्शन प्रोसेस यू नीड टू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ हीटिंग आल्सो. So lighting, cooling, heating, these are the different type of utilities for administrative purpose that also we need to track. अब इससे related what could be my different type of analysis an auditor need to perform? क्या क्या analysis एक auditor कर सकता है या करना चाहिए? We will talk about that. So what it should do? It should evaluate the impact from cost angle as well as from the viewpoint of conservation of energy. It's essential to check if there are the statutory norm prescribed for the company. Now what we mean here कि ऑडिटर को क्या चेक करना है, कॉस्ट एंगल के अलावा क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जैसे आज की डेट हम वाटर के लिए कहते हैं द वाटर शुड बी कंजर्व्ड. इट शुड नॉट हैपन दैट वी आर यूजिंग एक्सेसिव, देयर शुड नॉट बी एनी वेस्टेज. सो व्हाट इट इज फॉर द इलेक्ट्रिसिटी आल्सो. सो ऑडिटर को एक चीज ये चेक करनी है इन हिज कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट दैट वाटर का किस तरीके से यूज हो रहा है ऑफ माय पावर. इज दिस गेटिंग वेस्टेड, or wastage may arise due to some accidents. It may be a normal part of my production process, or it may be due to the abnormal reasons like accident due to machine breakage, or it may happen due to the reasons which could be controlled, like machine का breakdown है, उसमें से oil leak कर रहा है, or machine is not functioning properly, it discharging more of water, or it's consuming more of electricity क्योंकि उसकी मोटर ढंग से काम नहीं कर रही है. So these are the some of the points जो not only from cost angle impact करते हैं but also from conservation point. Also what we need to check is some statutory norms are applicable. Now statutory norms क्या है कि preservation से related, some environmental control से related. Now what it says, we know in pollution control if you are using some sort of companies engaged in a production of some that involves some hazardous process which is not good for the environment and maybe emitting, जिसमें से कुछ जो है emission हो रहा है, जैसे for example in a form of your water where some liquid things are being emitted and being thrown in the water river, so which is not good. अभी बीच में water pollution के ऊपर कितना you would have seen around in the news and otherwise also. So there are the strict government regulations that when you emit
any waste part of either in air जो कि तुम्हारे धुएं के फॉर्म में निकल रहा है, और इट मे बी इन अ फॉर्म ऑफ द लिक्विड, और इट मे बी इन अ फॉर्म ऑफ द सॉलिड जो आप हॉस्पिटल के वेस्ट होते हैं, दोज आर रियली रिस्की, क्योंकि उसमें कुछ चीज ऐसी होती है, इफ यू इवन टच दैट इट मे मेक यू सिक, उससे बीमार हो सकते हैं, इट हैज वेरी बैड इम्पैक्ट. So there are certain disposal methods that need to be followed. So that also need to be checked. This company is doing that. आपको छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूँ. I really don't know how many of you are aware about it, especially which is applicable to most of the companies. That when in today's environment, people are using these laptops and computer devices. So what it talks about, can you throw the computer like this? No. Now the law says that you need to dispose of your computers in a certain manner, and then you need to call certain authorized vendors who can dispose of your laptop and computers also. तो उसको dispose of करने का एक process है. तो क्योंकि what happens, the laptop and these computer servers and a screen, they carry certain amount of magnetic fields which are not good for the environment, and if they're not being disposed of in a proper manner, it may not be good for the health and environment of the people and animals, the living creatures. So that is also an important part for the focus of the analysis by the auditor. What else they are supposed to do? They need to see what the company falls under the energy incentive industries. अब कुछ इंडस्ट्रीज जो है वो एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, लाइक एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, स्टील, यहाँ बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, आपका केमिकल है, फर्टिलाइजर्स है. तो वहां पे ना, इफ the company where you are working or maybe gone for an audit, you have to see which category this company goes to. Or agar wo they are energy intensive companies, there the focus on my utilities and energy efficiency is more. वहां पे उसको ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका मेजर पोर्शन जो है कन्वर्जन कॉस्ट आएगी, आपकी यूटिलिटी कॉस्ट आएगी. सीमेंट कंपनी है, वहां पावर बहुत ज्यादा यूज हो गया, स्टील कंपनी वहां पे बहुत ज्यादा होगा. So for those areas, the auditor need to focus more how the utilization is taking place of these utilities. External benchmarking, it may be useful. अब वो किस तरीके से analysis करेंगे? Now we know that there are certain benchmark which may be the industry benchmarks, which may be prescribed by some authorized institutions like Bureau of Energy Efficiency. Now what it does, it has prescribed certain norms for the usage of the energy, कि तुम्हें कितना energy use करना चाहिए for a particular type of product. So external benchmarking is again a very strong tool which may be used for the analysis purpose. Now, performance analysis performance parameter for would include the consumption of fuel for generating the energy and then use of energy for thus produce per unit of the final product. अब जब उसको एनालिसिस कर रहे हैं तो क्या करेंगे, एक तो उसका प्रोडक्शन प्रोसेस है और फिर 10 प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, एक यूनिट में प्रोडक्ट के मेरी कितनी यूज हो रहा है. सो एनर्जी जनरेटेड पर यूनिट ऑफ द फ्यूल कंज्यूम्ड और फ्यूल कंज्यूम्ड पर यूनिट ऑफ द एनर्जी जनरेटेड, दैट कुड बी अप्लाइड फॉर द पावर, स्टीम, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जो भी यूटिलिटी यूज हो रहे हैं. सी देयर वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट पॉइंट्स. एनर्जी जनरेटेड पर यूनिट ऑफ द फ्यूल कंज्यूम्ड, फ्यूल जो हमने कंज्यूम किया है एनर्जी को जनरेट करने के लिए, एक यूनिट ऑफ एनर्जी जनरेट करने के लिए हमने कितना फ्यूल कंज्यूम किया, और फ्यूल कंज्यूम टू पर यूनिट ऑफ द एनर्जी जनरेटेड. ओके, सो हमने अगर जो हमारा प्रोडक्ट बनाया है उसमें हमारी पर यूनिट कितनी लग रही है, वैसा वर्सा. नाउ what else? Measurement of improvement in power factor, like reduction in kVA demand charges. क्या हमारे कोई पावर में या उसमें कोई इंप्रूवमेंट हुई है? Has my demand, because kVA is kilowatt, ampere kind of, this is a measurement for the power analysis. Now each company requires certain amount of kVA to run those operations.
फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लीजिए, एक एसी चलाने के लिए आपको 2.5 से 3 केवीए की पावर चाहिए। इतना ही चलाने के लिए आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर यू रिक्वायर। नाउ व्हाट हैपेंस, हाउ डू यू सी कि कंपनी अपनी एनर्जीज को अपनी यूटिलिटीज को हाउ एफिशिएंटली दे आर यूजिंग। सो यू, वन ऑफ द मेजर इज देयर एनी इंप्रूवमेंट इन पावर फैक्टर, मींस इज देयर एनी रिडक्शन, कि पहले मेरे को 5 चाहिए था, मेरे को 4 चाहिए। नाउ बेसिकली इन माय कंपनी the requirement is of the 30 kVA, but we are managing with 25 kVA. So that demonstrates the improvement. And so what it is stated in the cost audit report. All such improvements, ऐसी कोई improvement की होगी तो auditor उसको analyze करता है, check करता है और उसको report में लिखेगा. Now this is the part of analysis. या फिर अभी जैसे पहला पॉइंट हमने कहा एनर्जी जनरेटेड पर यूनिट ऑफ द कंज्यूमर, fuel consumed, or my fuel consumed per unit of the energy generated. फ्यूल से हमने कितनी एक यूनिट एनर्जी जनरेट करने के लिए कितना फ्यूल कंज्यूम हुआ, या फ्यूल कंज्यूम करके मैंने कितनी एक एनर्जी जनरेट करने के कितना फ्यूल कंज्यूम किया, बात एक ही। ओके, सो सेम वे द कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग एनर्जी पर यूनिट and cost of consuming energy per unit of the finished goods would be critical part of analysis. What we mean by this? It means मेरे एक यूनिट बनाने के लिए मेरी कितनी एनर्जी यूज हो रही है। So to make a product, we say कि per hour, to produce, let's say एक यूनिट बनाने के लिए मेरे को जो है just to make one mobile phone, or let's say 1 unit to produce 1 item, we can say in any form. It could be any production based process, or it can be any chemical, या 1 लीटर ऑयल बनाने के लिए उसमें कितना उसको इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, what is the use, what is the quantity of energy that is being used. So we quantify this per unit wise. तो एक मेरे फिनिश गुड बनाने के लिए मेरी 10 यूनिट लग रही है, and the cost of my 1 unit is let's say 10 rupees, so it comes to 100 rupees as my utility cost. So that is again a part of my analysis. The cost of generating energy per unit, यानी एक यूनिट बनाने के लिए कॉस्ट एक two things here we are focusing. A, what is the cost of per unit of the energy, and then cost of product. For 1 unit of the product, how many units of the energies are being used? क्योंकि मेरे पास per unit of energy की cost पता है. So if you are using 2 units, so I can multiply my number of units with the cost per unit of the energy. Okay, so these type of analysis need to be performed. Auditor need to check. So how they are calculating the energy per unit cost of the energy, and then if it is being internally generated, or if this is being purchased, then it comes from the billing part, invoicing part. Invoice से पता चलेगा आपको. And then कितने units उसमें use हो रहे हैं. एक unit के लिए to produce 1 unit of the finished goods or work in progress के लिए आपको semi finished goods के लिए कितना लग रहा है. What could be the another type of analysis? Trend analysis. Now what are trend analysis? देखना कि percentage of total production is a good factor indicator of the performance analysis. What does this mean? Trend analysis means we can say how energy is being consumed as a production of as a percentage of total production cost. So we see last month what has been this, what is this month. So energy as a total production cost means, let's say if my total production cost of 1 unit, अगर एक मेरी unit की total cost या total production cost is let's say 1000 rupees, and then my energy cost constitute 200 rupees out of that. So it is 20% of that. So 200 divided by 1000, it comes to 20%. So then we see that for different production levels, मेरी trending क्या चल रही है. So is this mean during this production it is 20%. Next month, what is this? What is the percentage to the total production cost? Next month, what is the percentage to the total production cost? So we see the trend. Will this always remain 20%, or will this come down?
Is this reducing? Is this increasing? That indicates my what? The use of my energy, the efficiency, and also about the utilization of my conservation of my resources also. If my cost is coming down, it means we are using our energies efficiently. और वो use of energy efficiently could be because of different reasons. It could be because of the efficient use. It may be due to the reduction in rates also. So is this clear to everybody? Any questions on this? Are we clear about the utility and energy efficiency analysis? See, it's very important for us to understand why we are going for this. So see, few things you need, see, for as a professional, you need to understand कि मेरे analysis करने का तरीका क्या होगा, मेरे को कौन कौन से फैक्टर रखने हैं. Now what are the different aspects? अगर मैं आपसे सिर्फ पूछूं कि आप यूटिलिटी एनर्जी एफिशिएंसी एनालिसिस क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर सिर्फ यूटिलाइजेशन के ऊपर, कि पहले ए पर यूनिट कॉस्ट कितना, अब कितना है. Anybody you ask about, but it gives you different ways. What should be the different ways of doing the analysis? So that is why this chapter is all about. Now, what are the key cost and contribution analysis? Now, what auditor should check? Reasonable and contribution by benchmarking with the industry average. आप क्या है industry average use करो इसमें, wherever applicable, जहाँ जहाँ मिल जाती है. For example, what could be that? Industry average क्या कहते हैं? कोई एक industry average आप मेरे को बता सकते हो? Let's say if I ask you about any ratio, अगर मैं current ratio का बोलूंगा आपसे, तो क्या industry average है? What is recommended? एक कंपनी का करंट रेशियो क्या होना चाहिए? Let's say if you're looking at the current ratio of any company, what should be the current ratio of a current? What is the healthy current ratio of a company? Very good. So it's basically 2:1 that we take this as. So 2 means my current assets should be 2 times than my current liabilities. So same way, अगर मैं ये बोलूंगा कि what should be my this is about the current assets. If I talk about my quick assets, so anyway, we'll not go so much in detail right now. So that's the basically a benchmarking that help us to do the analysis. इससे हमें help करने में, I mean, we can understand and interpret it. एक तो कंपनी का खुद कैसा चल रहा है, और what the industry says, and vis-a-vis that कंपनी कहाँ खड़ी है इंडस्ट्री के बेंचमार्क के हिसाब से. You check against your previous record कि खुद कंपनी की परफॉर्मेंस इन आइसोलेशन कैसी है, इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स कैसी है, इन कंपैरिजन टू कॉम्पिटिटर्स कैसी है, इन कंपैरिजन टू माय इंडस्ट्री बेंचमार्क्स, हाउ इट इज गोइंग ऑन. So we have different aspects. Now, what all this includes? Financial performance analysis, as we discussed, is the major part of my key cost and contribution analysis. It involves what? Cost relationship with the volume of production. जैसे हम कहते हैं cost in relation to volume of the production. For my 5,000 units, cost is 50,000. But for my 7,000, for my 10,000, my cost is 75,000. So it may be due to my fixed cost, which is being coming down with the scale of production as this goes up. जैसे जैसे rate of scale of production बढ़ता है, till certain stage हमारी जो है cost जो है वो reduce होती है, because my fixed cost do not change, but production अगर low होगा तो मेरी cost बढ़ेगी. So these ratios helps to I believe you understand what I'm saying. कि अगर मेरी एक कंपनी की फिक्स कॉस्ट अगर 50,000 रुपीज है, और कंपनी अगर with that fixed cost, if they can produce 100 units, okay, so that 50,000 is divided among the 100 units. But if a company is producing away from benchmark, means what?
बेंचमार्क से अवे का मतलब क्या हो गया? इट मे बी इन गुड सेंस, इट मे बी इन बैड सेंस. अब 2:1 का ही ले लेते हैं. अब कंपनी का बेंचमार्क क्या है? लेट्स से कंपनी 1:1 में है, तो गुड है बैड है? ओके, गुड. सो लेट्स से अगर मैं इसी का एग्जांपल ले लूं, 2:1 है, लेकिन लेट्स से कंपनी का जो रेशियो निकलता वो 1:5 और 1:1 आता है करंट रेशियो. इज दिस गुड और अ बैड? एक्सेप्टेबल है. सी 1:1 इज नॉट दैट बैड, फिर भी चलो काम चल जाएगा उसका, कंपनी धक्के नहीं खाएगी. 0.5:1 हो जाएगा तो फिर डिजास्टर हो जाएगा. अगर 3:1 होगा तो अच्छा है. इज दैट गुड? सी कंपनी का अगर करंट रेशियो 3:1 होगा तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड. इसका मतलब है कंपनी के पास लिक्विड फॉर्म में बहुत सारे एसेट्स पड़े हैं. अगर आपके पास घर में कैश बहुत ज्यादा पड़ा हो, बैंक में ना पड़ा हो, विल दैट गिव यू एनी रिटर्न? यार बैंक में रखोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, म्यूचुअल फंड में डालोगे तो रिटर्न्स आएंगे, जेब में कैश पड़ा रहेगा, कुछ करेगा? यस. सो दैट इज व्हाई 2:1 is considered as good. ओके, इन सर्टेन रेशियोज वी ऑलवेज सी कि उसमें क्या उसका बैलेंस होना चाहिए. ओके, बट लेट्स से अगर इंडस्ट्री का बेंचमार्क है, ठीक है, कि दैट यू नो ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट योर प्रॉफिट बेंचमार्क कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर रिटर्न जो है इंडस्ट्री में कहते हैं 10% के रिटर्न है, म्यूचुअल फंड में कहते हैं आज की डेट में, बट कंपनी 15 कमा रही है. इज दैट गुड और अ बैड? और 20% कमा रही है. Sometime crossing benchmark is good, provided what type of benchmark we are analyzing and what type of parameter we are analyzing. अगर profitability से related है और हम बहुत ज्यादा exceed कर रहे हैं उसको, then it is good. We may be away from the benchmark. Okay, so in good or a bad sense, which way? तो अवे तो कहते हैं ना घर के बहुत ज्यादा पास है, घर से बहुत ज्यादा दूर है. So same way, how close we are to the target. Okay, so we'll talk about that related to other ratios. Now it based on situation and what type of ratio we are talking about. Now, what are the different ratios? Proportion to the production and volume. अभी हमने बोला fixed cost को लेके. Then we see the cost. I mean, what is my direct material to the total cost of production. अभी हमने utilities को देखा to the or what is the proportion of my utility to the total production cost. Okay, the same way, different type of analysis. Now, what all analysis could include in this? Now, auditor need to do what type of analysis? Highlighting significant variation there in reporting period. अगर मेरे उसमें analysis में what we need to see any significant variance means पहले मेरा रेशियो जो था means let's say gross profit ratio था 15% था, now it has fallen down to 5% or it has gone to 25%, then it should be the part of the analysis. ऐसे क्यों हुआ है? These variation caused by non-recovering one-time cost or maybe may vitiate the ratios. So suggestion to avoid such variations may be provided in the report. That could have a long time rate contract, supplier agreement, consumption control. I mean, auditor जब देख रहा है कि वेरिएशन है तो उसको ये he needs to recommend, are the variations good? जब हम रेशियो एनालिसिस कर रहे हैं तो रेशियो एनालिसिस में मैंने देखा कि लास्ट मंथ माय ग्रॉस प्रॉफिट वाज 15%. Now this time it has gone to 25% or fallen down to 5%. Are these variations good? So we need to, what we need to do? Number one, are variations good?
See, if the variations, we need to look at two aspects. Okay, the variations are certainly if the let's say if you're in an initial phase of the production, the company शुरू में काम कर रही होती है. Now, let's say company has started off their production process. Okay, during production process, initially उनका production जो है per hour का, it may not be that high. Company may use its capacity. Company की, let's say, if you pick up as an example, company has capacity to produce 2000 units, okay, per day. But during initial phase of the production, the company has started the production today only. Can they produce 2000 units on the very first day or first week? They may not able to do that. So what they do, they target with 1000 units. So they may go with a 500 units, and then they gradually increase their production to the capacity. जो उनकी maximum capacity है, they try to produce up to that. So if my variation is meeting towards my main objective, that is good because it's growing initial phase में. But then at some point of time, the variation should be stabilized. So जब भी, but now this is what is related to my production, but what related to my gross profit. तो उस केस में देखना है the variation, अब उसके reasons क्या क्या है. Now, variation could be because of what? Non-recurring reasons. It may be like company has incurred a loss due to some, abnormal reasons, unexpected reason, flood आ गया. Okay, or there may be some major machine breakdown, or there may be shortage of the material, or certainly the cost of one of the material has gone up unexpectedly due to the shortage. अभी बीच में fuel के prices बहुत बढ़ गए थे. राइट, आजकल वेजिटेबल के प्राइसेस में बहुत फ्लक्चुएशंस है. दैट विल हैम्पर माय होटल इंडस्ट्री. उनके डिशेस में और उनके इसमें रेट में फर्क पड़ता है. whoever is using the input, अगर उनके इनपुट की कॉस्ट बढ़ जाती है, then what happens? It increases the cost of my product and reduces the profitability of the organization. So these variations need to be analyzed. ये कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट है और उसमें सजेशंस देने चाहिए कि वेरिएशन ज्यादा नहीं होने चाहिए. अब वेरिएशंस को कंट्रोल करने का क्या तरीका? लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स. कि भाई आज कोई बंदा तुम्हें बोलता है कि भाई आज लेबर 200 रुपए में, कल 300 रुपए में. सो व्हाट डू यू डू? कल के दिन आपका सप्लायर बोलेगा, सर टुडे आई एम सप्लाइंग यू दिस रॉ मटेरियल और दिस थिंग फॉर 500 रुपीज एंड टुमारो इट इज फॉर 700 रुपीज. सर आज मार्केट में रेट बढ़ गया. व्हाट डू यू डू? यू साइन द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स विद देम कि भाई मैं तुम्हारे साथ 2 साल तक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ, एंड फॉर 2 years, next 2 years you are going to supply me this raw material at this cost only, and then you have to manage this fluctuation at your end. अब ये बाकी की फ्लक्चुएशन आपने कंट्रोल करनी है. सो देयर आर डिफरेंट वेज टू कंट्रोल द कॉस्ट. तो कॉस्ट ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में वो बताना है उससे रिलेटेड. यस, so CVP decision making is again a part of that only. Now, what are the different type of analysis? अभी हमने बोला है कि जैसे मेरे की कॉस्ट कंट्रीब्यूशन फैक्टर में, की कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन एनालिसिस में we are looking at the ratios and then we are highlighting the variations. Then it include the comparison of actual cost performance vis-a-vis my standard and budgets. एक तो मैं ratios को यूज कर रहा हूँ एंड दूसरा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? आई एम यूजिंग माई कॉस्टिंग. कॉस्टिंग कैसे? एक्चुअल कॉस्ट वर्सेस माई स्टैंडर्ड और बजटेड कॉस्ट. If the company is using target cost, then we should identify the cost gap between the recommended ways to reduce the same. अगर मेरे कुछ budgeted cost है और उसमें variations आ रहा है, तो what is the reason for that variation? Why my usage of material is when we'll take up one case study on that. कि मेरे material usage बढ़ गया. Now why material usage has gone up? It may be due to the faulty machine. It may be due to unskilled labor. जो मेरा लेबर काम कर रहा है वो तरीके से अनस्किल्ड है, ट्रेनिंग नहीं हुई उसकी, उसने ज्यादा मटेरियल यूज कर लिया. ये मटेरियल की क्वालिटी कम है, घटिया है, दैट्स इंफीरियर. सी ग्रेड मटेरियल है. सो विद द सी ग्रेड मटेरियल द वेस्टेज इज मोर. यू नीड टू यूज मोर मटेरियल टू प्रोड्यूस. अच्छा मटेरियल होगा तो ज्यादा चलेगा. वो कहते हैं ना, छोटी बैटरी है, if you're using a small cell, a cheap grade cell, it lasts only for few weeks. 2 हफ्ते में, हफ्ते भर में खत्म हो जाएगा. But if you're using a good quality battery, it lasts for 2 months. So it depends what type of input you're using. So when the part of analysis A, ratio. Secondly, we are looking at the
budgeting, costing, where we are using our actual cost with my standard cost, and then process followed by organizational investigation. उसके उसमें variations analysis करने हैं उसको. What else? In addition to this, company management should be in-depth analysis of contribution earned by each product. अब वो product wise analysis की बात करते हैं. What an auditor can provide? Product wise. अब company के 4 product हैं, तो हर product के product wise. Company in overall may be making, let's say, a 20% net income. Okay. So what is the company's net profit? Net income 20%. Okay. Now this 20% is divided among 5 products. So we see this 20% of this 20%, product A is contributing how much? Maybe 25%. Product B maybe 30%, and product C maybe only 2%. So then it makes the product wise analysis. और वहीं से आपको inputs मिलते हैं improvement के. And this is what is the part of my performance analysis. And so what is being highlighted by the auditor. ये कई बारी management को बहुत अच्छे inputs आते हैं auditor report से, which is not generally provided by the internal resources नहीं देते, and they may not be giving it क्योंकि ये उनकी performance के ऊपर highlight करता है कि भाई तुमने क्यों नहीं use किया इसको. So whenever there are some external auditor, they perform these type of analysis. Is it a good tool to make this by product wise? Good decision making tool by making the product analysis? Yes. Effective? So the contribution analysis may be given, may give an absolute amount per unit finish. By now how we are doing the different type of analysis क्या करें. एक तो मेरा in depth analysis product wise आ गया. Then we look at the contribution per product कितना आ रहा है, net profit कितना आ रहा है, what is the sales PV ratio product wise. So these type of different ways we can perform the analysis on. Now what else could be there? It could be in a form of, अभी जैसे CVP की बात कर रहे थे ना, यहाँ पे आ गया break even analysis. Okay, the margin of safety at current volumes. What is that? Now it's basically a part of different type of analysis we perform on a financial measure, ratio, my actual versus cost versus budgeted, my in-depth analysis product wise, and then my break even and margin of safety kind of analysis, जिससे हमें पता चलता है कि mixed, fixed और variable cost का क्या composition है, how that is being split off, and at what point my the cost start rising. वो एक law of economics है ना, एक certain point के बाद में मेरी fixed cost कम नहीं होती, बढ़ जाती है. Now see, these are all the aspects that an auditor should use while making their analysis on this. See how powerful is this costing. Costing is सिर्फ तुम्हारा ये नहीं और audit कि मैंने ये देखा कि ये report बनानी है, you have to maintain this in this particular manner, that is the way. But here my analysis part is coming up, which is very very powerful tool. And trust me कि ये जो analysis tool है मेरे आज की डेट में, this is being used in the corporate world like anything. सारे analysis इसी के ऊपर होते हैं. It's very very relevant topic here that will help you in your professional life. आप आगे जाके जब हमने करियर में आगे जाएंगे देखेंगे यही सारे analysis यूज होते हैं. The entire every day all companies are working on this. So auditor should report on evaluation of use of the contribution analysis data for the decision making like pricing, accepting, rejecting an order, make or a buy. So किसमें अभी हमने costing में पढ़ा है ना कि how all this helps. Like if I have to determine my pricing, it helps me in that. Rejecting order, accepting order, and make or a buy decision, or means company should make it or should buy this from outside. Company should accept an order, company should accept an international order or not order, what is my fixed cost. I mean that kind of decision making. Are we clear about the key cost and contribution analysis? There are multiple points, I'm just touching over the key points, right? Any questions on this?
सी आई रियली डोंट नो, सी इट ऑल डिपेंड्स, ये सब डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल के ऊपर, मैं आप कौन से प्रोफाइल में, ओके। तो राइट नाउ सी एट इनिशियल फेज ऑफ माय करियर, अगर मैं अपने करियर में बोलूंगा तो मैंने ये सब चीजें इतनी ज्यादा नहीं की, ओके। बट व्हेन यू गेट इनटू द रोल्स, आप कौन से रोल में है, इफ यू आर इन अ पार्ट ऑफ द एनालिसिस, अब जब आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो आप देखेंगे वहां पे ये सब के सब बजट्स बनते हैं और वहां पे बैठ के वेरिएशंस डिस्कस होते हैं, you will see this happening. So are you working somewhere? If you're working somewhere and then देखिए, अगर if somebody, उसका प्रोफाइल क्या है, as an accountant somebody may be only recording the transactions, so there you may not be doing all this. Or an accountant as an account officer, he may be only authorizing and processing bills, but some as a manager need to go and perform these type of analysis. So please wait, you will see these things when as you move forward in your career, you will see these things coming to place. So जितने बैंक्स हैं वहां पे बैठ के एनालिसिस होते हैं, जितनी भी कंपनीज है वो अपने प्रोजेक्ट वाइज ऐसे एनालिसिस करती है, and you will see all big companies, if I talk about any vendor management company, any telecom company, अब मैं बहुत सारी e-commerce companies में देखे हैं जो ये इस तरह की एनालिसिस हो रहे हैं, because I have been working with these companies, so I have seen the powerful tools being used over there. Okay. Okay. So I mean to say, अभी तो आप लीगल कंसल्टिंग फर्म में हैं, तो आई मीन टू से यू विल सी एज यू गो मूव फॉरवर्ड इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो वहां पे बैठ के आपके सारे एनालिसिस शुरू हो जाएंगे. So that's the core part of the subject. And it's very powerful tool. You see, as a cost accountant, you're not only supposed to work only for manufacturing, but you get into any type of role. It may be related to financial analysis, it may be related to your accounting. It may, जैसे आप accounting और उसमें जैसे senior role में जाएंगे, then you have to start doing the comparison. वहाँ पे accounting, bookkeeping तो कोई भी कर लेगा. When then these type of analysis comes into play, it's not only from an auditing perspective. The management does this. बहुत सारे सॉफ्टवेयर बने हुए हैं इसके ऊपर, डेली के डैशबोर्ड से निकलते हैं. The companies are using this as a using technology for doing this. Anyway, we'll move as you gradually grow in your career, you will see more these things coming for a use or as a daily use. Now, product, service and profitability analysis. Now, how do we perform the product, service and profitability analysis? Again, part of my cost auditor report. Okay, so what it says, what my unit cost is based upon, और जो मेरी सर्विस के यूनिट प्रोडक्ट जो होते हैं मेरे प्रोडक्ट के और सर्विस के प्रॉफिट किस चीज के ऊपर बेस्ड, on two things. Okay, one is basically my revenue and second is my cost. Revenue is my selling price and then my cost per unit. So the entire analysis will be around this. So what happens, इसके ऊपर मेरे analysis क्या क्या हो सकते हैं? What all analysis would cover? Analyze if the business performs to seller market or buyer market. This would facilitate the assessment of impact of the challenges in selling price and changes in the cost on the profitability or the otherwise of the product or services. अभी मेरे को क्या करना है यहाँ पे, where the seller market है buyer market है. अब जहाँ पे seller market है, जहाँ पे seller ही prices determine कर रहा है, तो वहाँ पे क्या है, what we can do, how the sales prices are being fixed. उसके now what are the changes in the cost. अब मेरे sales price का और जो मेरी cost है, because what I buy that becomes my cost and that impacts my profitability of the product. Okay, while in selling price is a single number, the cost is a sum of different element. अब selling price तो मैं क्या analysis करूँगे, that you will see that how your at what rate your supplier is selling you, कौन सी market से खरीद रही हो, but उसमें that's a one single unit. Cost is a component of multiple units. Okay, multiple factors like my direct material, direct labor, variable overhead, fixed overhead, selling, marketing. There are multiple factors related to cost where we can do the analysis. So he needs to see the basis to allocate the indirect costs is consistently applied. तो जब हम कॉस्ट को एनालाइज कर रहे हैं, when we are doing the product and service profitability analysis,
प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करने के लिए उसकी कॉस्ट को एनालाइज करना पड़ेगा प्रोडक्ट की, क्योंकि सेल्स में ज्यादा कुछ एनालाइज करने के लिए नहीं मिलेगा, बट इन द कॉस्ट देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, सो देयर द एनालिसिस बिकम्स more deeper related to my cost because there are multiple factors. Now, what could be the different factor? The allocation of cost. What are my different composition of cost? और वो cost कौन सी cost सबसे ज्यादा है? Let's say एक material बनाते time in a service industry cost will be more of a labor, क्योंकि वहाँ material use नहीं हो रहा है. एक law firm है, law firm में सारी की सारी consulting जा रही है, वहाँ को material cost होगी? No, there will not be any material cost. ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है, वहाँ मटेरियल कॉस्ट क्या होगी? वहाँ पेपर, पेन, बुक, ये सब थोड़ा सा लैपटॉप वगैरह करेगा, बाकी मोस्ट ऑफ द थिंग्स इज बीइंग चार्ज फॉर द सर्विस चार्जेस. एक रिटर्न बनाना है, कंसल्टिंग देना है, लॉ फर्म अपनी एडवाइजरी दे रही है, इट्स मोर रिलेटेड टू द लेबर कॉस्ट. एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में व्हाट आर द कॉस्ट? मेनली कंपोनेंट लाइक माय मटेरियल, माय लेबर, माय other overheads which are being used for the production process. So those factors need to be analyzed. जहाँ पे फोकस होना चाहिए, जहाँ पे आपको एनालिसिस करने को ज्यादा, where there is a bigger area where you can perform the analysis. In case of the services, अब ये तो अभी हमने उस सर्विस की बात की, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दैट इज मेकिंग गुड्स. अब तो द कंपनीज व्हिच आर मेकिंग ऑफरिंग सर्विसेज, दे आर नॉट मेकिंग प्रोड्यूसिंग एनी गुड्स. यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम किस बेसिस पे उसको मेजर कर रहे हैं? यूनिट ऑफ मेजरमेंट मींस कैसे हो गया? लेट्स से कंसल्टिंग फर्म है, लॉ फर्म है, अब उसमें क्या यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा? कैन यू डिसाइड अ यूनिट प्राइस फॉर अ लॉ फर्म? Each case will be different. If this is related to a law firm maybe making an agreement, और वो एग्रीमेंट भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं. It may be an agreement related to maybe related to a partnership. It may be an agreement related to with my vendors. It may be an agreement related to with the partners. तो अलग अलग तरीके के एग्रीमेंट है, और कितने पार्टनर्स है, उसमें कितनी इंट्रिकेसी है. सो देयर the unit of measurement is very important and need to be studied carefully कि कैसे किया है. Are you with me? Getting me? So in a case of the production, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहां तो पता भैया मटेरियल लग रहा है, ये लग रहा है, यहाँ पे इतना लग गया. अब सर्विस इंडस्ट्री में यूनिट ऑफ मेजरमेंट कैसे डिसाइड करोगे? So due to the diverse nature of the services, अभी हमने क्या डिस्कस किया? अब एग्रीमेंट की बात करें, या कोई मान लो somebody has अप्रोच फॉर taking a defend in the court of law. अब कैसे डिसाइड करोगे क्या होगा? अब वो वहां पे पर डे के चार्जेस होते हैं, और गोइंग बिफोर द टैक्स ट्रिब्यूनल, अब टैक्स, इनकम टैक्स से रिलेटेड केस है, तो वहां पे पर डे के चार्जेस होंगे. So it is essential to exercise the care in analyzing and profitability thereof. कि उनके किस तरीके से मेरी कॉस्ट डिसाइड हो रही है, कैसे, कितने मैन पावर, कितने घंटे लगेंगे, कितने मैन आवर्स लगेंगे. इट्स अ सीनियर रिसोर्स, जूनियर रिसोर्स, दैट काइंड ऑफ. सो ऑडिटर शुड बाइफरकेट द सेल्स एंड कॉस्ट फॉर ईच पोर्शन एंड देन कंप्यूट एंड कमेंट. सो देयर, अब ऐसी किसी इंडस्ट्री में अगर आप कॉस्ट ऑडिट और उसकी रिपोर्ट बना रहे हो, तो देयर अ केयरफुल स्टडी हैज टू बी डन कि कॉस्ट कैसे निकल रही है, बट देन एनालिसिस शुड बी डन. हो सकता है कंपनी में जब बैठ के उसकी यूनिट कॉस्ट हो रही हो, वो सीनियर और जूनियर रिसोर्सेज दोनों के लिए 500 रुपए का रेट लगा रहे हो, 500 रुपीज पर आवर और 5000 रुपीज पर आवर, विच मे नॉट बी करेक्ट और नॉट बीइंग रिकॉर्डेड प्रॉपरली इन अ फाइनेंशियल बुक्स. मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो रहे. So there it need to be studied by a cost auditor and then offered the comments for improvement or how the profitability may be increased. Cost auditor बोल सकता है कि भाई a senior resource is reporting is 10 hours, we are not charging enough for that. मेरे senior resource और junior resource दोनों की cost बराबर आ रही है almost, there is no major difference. Whereas we may be paying a very high salary to a senior resource and a mediocre salary to a junior resource. So what it should be done? अब now what could be the another thing? What at जो जहाँ पे मेरे क्या है, joint cost आती है, joint product बन रहे हैं, by product बन रहे हैं. How the splitting of joint cost is taking place? Splitting means वहां पे बैठ के मैं cost किस तरीके से allocate कर रहा हूँ. That is again a part of the analysis.
और जो मेथड वो यूज कर रहे हैं दैट शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली. सो वी आर टचिंग अपॉन द की एस्पेक्ट्स जो मेरे मेन एस्पेक्ट्स हैं. Okay, so when we talk about for my product and profitability analysis, so it's mainly related to my market related, it's maybe related to my product, किस तरीके से बैठ के मेरी cost allocate हो रही है, and then the case of my joint products, how the splitting is happening. Or split up point पे, what is the basis of my allocation? We discussed last time also. Clear? Now what else? Auditor is expected to provide thorough evaluation out of the product that are contributing more or less to the overall performance of the company. अभी हमने डिस्कस किया था कि अभी प्रोडक्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के लिए अभी हमने बोला था 5 प्रोडक्ट है ए बी सी डी, कौन सा प्रोडक्ट मेरे को कितना कर रहा है, एंड इफ कंपनी इज हैविंग ओवरऑल 25% ग्रॉस प्रॉफिट और ए प्रोडक्ट 50% दे रहा है एंड डी प्रोडक्ट इज कंट्रीब्यूटिंग ओनली 5%, सो that type of analysis should be highlighted कि इसका क्यों कम आ रहा है and what are the risks related to those things. What could be else? The analysis should separate appraise the profitability of newly introduced product and also the proportion to the total profit. अगर कोई नए प्रोडक्ट आए हैं कंपनी ने लॉन्च किए हैं उसका अलग से एनालिसिस होना चाहिए और उसका कंट्रीब्यूशन मेरे टोटल प्रॉफिट के ऊपर क्या है, दैट शुड बी presented in my profitability analysis. So this is what is the approach towards my product and service profitability analysis. और क्या कर सकते हैं apart from this concept of product, ROI, return on investment could be used. अब क्या कर सकता हूं, we can see domestic market में कितना है, export market, export means international market में क्या है profitability. Generally where the profitability is more, domestic या international market में? International. Yes, because the buyers are more cash rich, they pay you more, and they in their own country they will not be finding these type of products. So in international market you may be finding it more revenue making. So जब कंपनी के एक ओवरऑल प्रॉफिट नजर आ रहा है 25%, we need to see यार डोमेस्टिक में कितना है, इंटरनेशनल में कितना है, प्रोडक्ट वाइज कितना है. सो आई मीन दैट्स ऑल द पार्ट ऑफ एनालिसिस. तो प्रॉफिटेबिलिटी में कोई कंपनी कहेगा 25% है, सो हाउ यू कैन इंप्रूव अपॉन दैट, तो वो सब आपके एनालिसिस का पार्ट है. एंड जब आप कोई रिकमेंडेशन देते हैं तो आप बताते हैं, लेट्स से इफ आई लुक एट योर मार्क्स, लेट्स से सम मिस्टर Anand has scored 60% or 55% in his final group. Okay, he cleared his exam. अब उसके अगर मैं जब उसके मार्क्स देखता हूँ, then I look at, okay, this guy has scored 55%. Okay, in one subject he is scoring more than 70%, and one subject he scored just more than 40%, just passing marks, maybe just above the 50. So where the performance is going down and what are his core strength areas? So I mean that जैसे हम अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर करते हैं ऐसे ही यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट वाइज चल रहा है, मार्केट वाइज चल रहा है, मेरे कॉस्ट वाइज एनालिसिस हो रहे हैं. Now what else? Top 5 and bottom 5 products. Now that's another angle. अभी जब मैं अपनी एक कंपनी में काम कर रहा था, वहां पे हमारे सीईओ जो थे, then he said that if you want to improve your processes, अगर किसी चीज को improve करना, focus on your bottom quartile. नीचे का जो तुम्हारा 25% है उसके ऊपर फोकस करो, धीरे धीरे तुम्हारी कंपनी की परफॉर्मेंस अपने आप ऊपर आ जाएगी. So when a cost auditor is doing profitability analysis, वो कह सकता है ये top 5 products ही हैं और bottom 5 products ही हैं. Nice way to focus. Another way, so this will help company to understand कि कौन से प्रोडक्ट मेरे अच्छे काम कर रहे हैं, किनसे ज्यादा हो रहा है, और कौन से मेरे नॉन परफॉर्मिंग प्रोडक्ट है. सो दे व्हाट हैपेंस, जो नॉन परफॉर्मिंग प्रोडक्ट है उसके ऊपर फोकस कम करो, डाइवर्ट योर रिसोर्सेज टुवर्ड्स प्रोडक्टिव वन, सो दैट प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव्स. Now
One more area, market and customer profitability. What else? You should do the segment method adopted by a company for analysis and its profitability. तो अगर segmentation method use करते हैं, I mean segment means department wise, area wise. I may say this is my different segment. Segment A may be focusing on one particular type of product or one particular area. So जहाँ पे मैंने segment बांटे में, my one segment will be focusing only in north area. One segment will focus only in south area. Likewise, in the north also, southeast, northeast, northwest. Likewise, अलग-अलग segment बनाएंगे. Objective is to take the suitable actions for the segment that are not performing. यानी area wise जहाँ पे बांट दिया है, तो वहाँ पे area wise analysis हो जाएंगे. Now, when we do these things, analysis में क्या होता है कि we see challenges arising in segment method in computing the cost. वहाँ पे सबसे बड़ी problem क्या आती है segment method में कि वहाँ पे cost allocation करना बड़ा मुश्किल होता है. तो he should focus carefully कि allocation cost कैसे हो रही है segments के basis में. It might happen कि किसी segment में cost तो ज़्यादा allocate कर दी है, लेकिन उतनी होनी नहीं चाहिए थी. It could be the reason because of which a segment's profitability may be low. So that need to be analyzed segment wise. Now, while doing this analysis, turnover should not be ignored for analysis. और जब ये analysis कर रहे हैं उस समय पे ये नहीं, at one point of time we have to perform the analysis. We should look at what trend. उसका trend क्या है? Product A आज तो 50% दे रहा है, क्या कल भी 50% दे रहा था? या कल 20 था, आज 50 या कल परसों फिर 10 हो गया? So we look at a trend also, how the trend is going, improved profitability and consistent performance. Where it is going down, segment की performance कैसी आ रही है? इस segment is consistently down या आज ही down है? We talk about a particular player ना, no, this one day he has not played well, उसके zero आ गए तो it means he is not doing good. You always look at his average, no? So that is why we say we look at the trend analysis. I mean, different ways to look at an analysis. Should analyze the cost acquiring the market, customer cost involved in servicing, maintaining them. अब हमने ये भी एक देखा कि as I discussed with you last time also, previous class में मैंने एक example discuss किया था, where a customer may be placing one single order of 50 units, and one customer may be placing 10 orders of 5 units. So the cost of maintaining a customer which is placing a small order of 5 units 10 times as compared to a customer who's placing one order of 50 units will be higher. क्योंकि जो तुम्हें 10 times order place कर रहा है उसकी cost ज़्यादा होगी. So you have to look at which customer और कौन सी market में मेरे बड़े orders आ रहे हैं जो मेरे लिए ज़्यादा profitable है. That may be a part of my again of area of my analysis. The way we should do the analysis and present. Again, top 5 market, bottom 5 market, top 5 customer, bottom 5 customer. That kind of analysis may be presented. Now, another apart from this, risk. Risk is another very important factor that should be considered. Now, what is this? Over dependence on a few customer or selling in one market only. Now, a cost auditor should focus here. It is like this, that every order is coming only from Mr. A every year, every day. So there are not many customers who are placing orders. So what happens? किसी दिन वो customer चला गया तो sales down, company will suffer revenue loss. So that type of risk analysis should be done. So या फिर किसी customer की क्या है में हमारा, they are not, we are doing, today there are many credit terms. क्या करें आज की डेट में हम मार्केट में क्रेडिट में बेच रहे हैं ना, उधारी में. We follow the installment systems. We say, okay, you pay me on installments. What happens? पैसा नहीं देता है, bad debts बढ़ रहे. So a customer history has to be seen. What are the risks associated? That may be another form of the analysis.
So that is the focus of my performance analysis. And now these are the issues related to my management operations that need to be highlighted. अब ये सारा काम किसको मैनेज करना होता है? This is all related to my management reporting issues. Correct? So an auditor need to focus on these things and present and do analysis and then share his observations in the report. Now, what could be related to my working capital and inventory? Now, working capital, each product and evaluate the adequacy otherwise thereof. We are going product group wise. Now, working capital may we have multiple components of working capital. We should focus on each type of component. ये नहीं है कि working capital में सिर्फ बैठ के assets के ऊपर और सिर्फ current assets में only on account receivable. No, we should look at the other aspects also. Prepaid expenses. What are that? The status of this. What are my other current assets, which may have the higher amount. The cost should provide independent assessment of how it is being currently handled and how it could be improved. That's the expectation in the analysis. That shows the power of the report. The utility of the cost audit report comes when the analysis are done और उसमें जो उसकी recommendations निकल के आ रहे हैं. What could be included in my working capital analysis? It should be traditional measure ratios. क्या use करें आप? Current ratio, quick ratio, turnover ratios. I mean, these type of ratios are being used for each product group separately. क्योंकि आप कंपनी का एक overall level में देखेंगे, then it may show you one type of picture. But when you look at it product wise, it will give you more in-depth analysis. अगेन जैसा अभी हमने पहले देखा था मार्केट कस्टमर के लिए प्रोडक्ट वाइज एनालिसिस सेम वे व्हेन वी आर लुकिंग एट अ वर्किंग कैपिटल वी गो प्रोडक्ट ग्रुप वाइज one particular product may be causing me more issues. Maybe एक प्रोडक्ट के लिए मेरे अकाउंट रिसीवेबल्स बहुत ज्यादा है और दूसरे में मेरे अकाउंट रिसीवेबल्स कम है and for one product I may be having a high amount of my account payables. And for another product group I may not have high amount of accounts payable क्योंकि वहां पे मेरे I may not have so many liabilities over there and liabilities ना होने की वजह क्या हो सकती है the company need to make more cash payments over there. There is no credit facility. So वहां पे मेरे assets कम हो जाएंगे मेरे current assets कम. So these ratios will indicate for each product group कि कहां पे क्या मेरी position चल रही है related to my working capital. Now, working capital is basically has a cost. Cost क्यों? Because we require a cash. We may not have. We may have to borrow that again. Now, as a percentage of total working capital, total cost of managing the working capital as a percentage of total working capital invested may be a useful performance indicator. Inventory is what very important part of my current assets. अभी हम बात कर रहे थे assets की. So what could be related to my inventory? My stocking policy, inventory valuation method क्या है, inventory record, physical record verification procedures क्या है, that will reflect. These analysis will show procurement policy क्या है कि मेरे inventory का इतना बड़ा stock क्यों है. You may comment कि एक कंपनी का inventory level ठीक है या नहीं है. How will you comment? You will say your procurement policy says that you have to stock for 6 months in advance. यार आपका इन्वेंटरी लेवल तो बढ़ा हुआ है. Why? Because क्यों आपकी procurement policy गलत है ना. उस procurement policy के हिसाब से you need to procure the product 6 months in advance. Now raw material is easily available in a market. Why you need to procure it 6 months in advance? Or if your procurement policy says that we will procure it a week before, मतलब week before का मतलब क्या है? मतलब it might happen that raw material is not available in the market. It may run out of the stock. So what is the safety level that you have to maintain? Now, what is the valuation method that you are using? FIFO, LIFO.
ना मार्केट में इन्वेंटरी की अभी प्राइसिंग क्या चल रहा है, इट्स अ at some point of time we see the price rising prices, sometimes we see the falling prices. So different method impacts my cost of goods sold in a different environment. I discussed in the previous class also. So that should be analyzed, और उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, वर्किंग कैपिटल के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, बिकॉज माई कॉस्ट ऑफ माई वर्किंग कैपिटल विल इंक्रीज. मेरा जो एंडिंग इन्वेंट्री है उसकी कॉस्ट बढ़ती घटती है ड्यू टू माई चेंजेस इन माई इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड. और फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुई, व्हाट इट शोज, या फिजिकल वेरिफिकेशन में नजर आया कि माई एज पर रिकॉर्ड आई हैव 5 lakh worth of inventory, but physically we found that it was 4,50,000, and it means 10% loss on inventory. So these type of analysis really helps to comes as a very valuable inputs to management from auditor side. Now this is the part of analysis. Analyze inventory into components. आप inventory को भी कैसे analyze कर सकते हैं? Like raw material stores, work in progress, finished goods. Make different components. For each category, system inventory control should be evaluated like ABC. The ABC, you understand, no? That the A category, which is a very high costly item, VAT, FS&D. I mean, different techniques we are using, EOQ, economic order quantity, just in time system. So, I mean, the quality of inventory, how they are reporting, and aging analysis, kitni aging pe padi hai. You know, aging analysis. Inventory, something we do the aging analysis. अगर मेरे पास 100 आइटम पड़े हैं, उन 100 आइटम में से I found that 10 आइटम्स पिछले 2 साल से मूव ही नहीं हुए. इट मीन्स व्हाट, ये 10 आइटम की जरूरत ही नहीं थी कंपनी को, और अभी भी हम इनको खरीद रहे हैं, ये स्टॉक में पड़े. देन व्हाई दीज वर बीइंग परचेस्ड, व्हाट टू डू विद सच ए इन्वेंटरी. और कुछ इन्वेंटरी मेरी ऐसी बड़ी फटाफट मूव कर रही है. सो आई मीन टू से दिस टाइप ऑफ एनालिसिस रियली हेल्प्स in terms of assessing the working capital requirement. Is my inventory level is very high, then my working capital requirement goes up, because ये मेरे assets ज्यादा बढ़ेंगे, वहां पे मेरा capital block हो जाएगी, because my inventory blocks major portion of my working capital. What they should analyze is receivables. Receivables किससे impact होंगे? When we sell any item on credit to a customer, what should be done? We should evaluate the credit worthiness of the customer. Why that is important? Why credit worthiness of the customer is important? कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड देने से पहले, किसी भी कस्टमर को क्रेडिट कार्ड देने से पहले क्या चेक करती है? They look at your salary. I'm sorry? Income. Yes, they look at your income sources. They look at your tax returns. ITR मांगते पिछले 2 साल की आपसे. So why? Because that indicates कि बंदा whether we should give him loan, whether he can pay back or not. And then credit terms and credit limits. Why credit terms? ये 90 days का है और मेरे को पे बैक करना है 60 days में, तो क्या मैं 90 days का क्रेडिट पीरियड दे सकता हूँ? मुझे मेरे बायर को 60 दिन में पे करना है और मैं आगे 90 दिन का दे दूंगा, तो व्हाट हैपेंस? मैंने 30 दिन का अपने ऊपर उधारी बना ली ना. So we need to look at our credit terms vis-a-vis my payment terms. Discounting policy क्या है, credit policy क्या है. Now these type of things comes as a part of my analysis, and that has an impact on my working capital requirement. Trade credits from the supplier is most crucial spontaneous source. अब मेरे को जो क्रेडिट मिलते हैं उससे मेरी वर्किंग कैपिटल की फंडिंग के ऊपर फर्क पड़ेगा. Now if I get trade credits means if I get a credit period of 90 days, then I don't need cash. So what we can do, we can check how much working capital I need, because मेरे payables की due date आ गई है. So we need to look at supplier wise, कौन आपको ज्यादा देता है. Now some supplier may be giving a big credit period, good credit period, but then they have
the issues with relative to in timing issues to supply, or they give you the inferior quality, या उनकी pricing बहुत ज्यादा होगी. So we need to look at those aspects also. ये credit period तो बढ़ा दिया, लेकिन आपकी rejection level बहुत ज्यादा है जो आपका supplier है. So some suppliers may be making it very what lucrative their offers. बोलेंगे ठीक है जी, आप मेरे को जो है 90 के बदले आप मेरे को है जो है 4 महीने में पैसे दे देना 3 के बदले. बट लेकिन वो क्या करते हैं, आपको सप्लाई जो आपको मटेरियल दे रहे हैं that is not of a good quality. So that's the part of my analysis. Some manpower analysis related to manpower cost. इसमें क्या हो सकता है? How manpower cost should be analyzed? Cost of recruitment, cost of maintaining manpower, and cost of separation. Cost of recruitment क्या हो गया? Cost of maintaining of manpower and cost of separation. क्या क्या हो गया पता है? How can we divide this? Cost of recruitment means giving advertisement, hiring, बंदों को उनके मीटिंग कराना. So it requires a cost. If you are hiring somebody from a placement agency, you have to pay some commission to that placement agency. That's the cost of my recruitment. There's a hiring team, अलग से एक hiring team होती है जो 24 घंटा hire करती रहती है resources को. That's the cost of my recruitment. Cost of maintaining means उनको जो salary वैलरी जो आप pay कर रहे हैं, incentives, bonus and whatever we pay, we are paying in form. Cost of separation means when somebody leaves, we pay them their dues, जो उनका जो भी whatever the leaves and everything. So the entire manpower cost is divided into these three heads. So these costs as a percentage of total salaries and wages, where my cost is going up. अगर hiring cost बहुत ज़्यादा है, it means what? Either the company is growing और वहाँ पे turnover बहुत ज़्यादा है. हर दूसरे दिन employee छोड़ के चला जाता है. There my manpower goes up, cost up. So if my manpower cost is going up, then it needs to be seen in these three brackets, how my cost is going up. So these costs could be broken up as per the hierarchy of the people. We can look at this. What hierarchy means? We can break this into top management level, middle order level and lowermost level. तीन level पे कहाँ ये मेरी cost ज़्यादा fluctuate कर रही है. See, more depth into the analysis, more you have the inputs for the improvement. What is the time taken for the recruitment? एक position आज एक manager चाहिए और we need somebody for doing a production for today and that position need to be filled up. Let's say अगर अगले महीने production शुरू होना है and that joining time is 1 month's time, but मेरे resources को hire होने में ही 2 महीने लग जाते हैं, ये join ही नहीं कर पाता. So it reflects about the hiring efficiency. Manpower productivity, idle time, overtime work, absenteeism, these are another factor related to my manpower cost. Productivity analysis हम वहाँ पे कर रहे हैं, idle time we are getting, overtime worked उससे मिल रहा है, and absenteeism कितनी absenteeism हो रही है. All this is basically part of my manpower cost. That becomes the focus of my analysis. Now performance analysis क्या होते हैं? We see in organization every employee is rated at the end of the year. He is being given some rating based on his performance, and then his growth opportunities are linked to that thing. जिसमें उसके organization. So now that may be another focus from the auditor side about the manpower cost. If the majority of the people are not getting good rating, it means people are not performing. Something is serious related to the hiring or with the management of the company, that they don't know how to manage the resources. क्योंकि या तो resources जो hire किए हैं वो they are not efficient, they were not capable, या हमें resources manage करने ही नहीं आते. It raises question on that. That's again a part of my manpower cost, which is being focused by the auditor. What could be the other areas? There the cost auditor could focus the risk analysis. Like downside, upside of any particular product, or taking suggestion, acceptance range, recommended mitigation tools. I mean, different type of risk may be related to my business. I mean, this is a very wide topic, so we can get into that more in detail. So risk analysis, जो अभी आज की date में, it may be related to your supplier of the
material, the risk may be related to your business, risk may be related to the political situation, risk may be related to the technology जो company use कर रही है, risk may be related to the the competition, risk may be related to the product life. So there are different type of risk analysis which is being done. Risk may be related to the future performance of the company. Company is already reached the saturation stage. So different type of risk is being performed. Environment and sustainability related, the analysis may be presented. The company kitna environment and friendly hai, how many type of legal notices or consumer legal cases may be initiated due to the non-compliance by government authorities. Quality performance, quality cost कितनी आ रही है कंपनी की, rejections कितने, customer complaint कितने हैं, that may be again a focus from an auditor side. Research and development performance, whether research and R&D के ऊपर जो पैसा लग रहा है, is there anything coming out as a new product? और last 2 years से R&D के ऊपर पैसा है, but there is no new product and new technology which has come up. Business performance, how companies business, performance and financial accuracy, speed, these type of financial analysis could be part. Then they look at the process wise, business process wise, उनके कैसी performance आ रही है, उनके within that department, how those department performance is being done. Value added analysis, business में कितना value add है, how the company and employees of the company are contributing. Performance of intangible assets, how my intangible assets are performing, कैसे. How do we know about the intangible assets? Company की goodwill कितनी, कब पता चलता है? How do we know? And when do we know? A company is running, okay? Do you know how much the company has, created their intangible assets? Intangible assets could be like, yes, some more analysis, label turnover, loss due to the trained employee left. That that's all a part of my manpower analysis. Okay. Intangible assets like my goodwill, my copyright, my brand value. So these type of analysis should be also the part of this. लेकिन मेरे को goodwill का कब पता चलता है? When we sell the company. During the lifetime of the company, you cannot assess goodwill. But copyright, if you are generated, you can go for that. You can patent. If you created any patents, you can go and record that thing. You can register the patent in the name of the company. But value in intangible assets, excess returns earned by the company over the industry average, वैल्यू इससे पता चलेगी कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, कंपनी का कस्टमर रीच बहुत ज्यादा हो गया है, कस्टमर उसका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है. इट मींस कंपनी इज क्रिएटिंग देयर intangible assets like in a form of the goodwill of the companies. Now company has become a brand value. It was not a big name, but today in the industry it's a big name. So those are the basically my intangible assets which it may be focused and presented. Stakeholder performance, like stakeholder performance किस वजह से? Earning per share growth, stock performance, market capitalization, dividend growth. These are the different aspects where my stakeholder performance is analyzed. Are we clear about those? Any questions on this? Okay, we'll talk about some of the perform management accounting tools. Like हर कंपनी में अलग अलग मैनेजमेंट अकाउंटिंग टूल यूज होते हैं. ओके, तो जो टूल वो लोग यूज कर रहे हैं कंपनी में, ऑडिटर शुड चेक कि कौन कौन से टूल यूज कर रहे हैं, एंड देन दे कमेंट ऑन दिस कि भाई वो टूल क्या है, ठीक है या नहीं है, और एडिक्वेट है या नहीं है. टूल मीन्स कंट्रोल्स. अब कंट्रोल के लिए कौन कौन सा टूल यूज हो सकता है? बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस. ठीक है, तो इसके ऊपर नाउ ऑडिटर हैज टू चेक कि उनका बजटरी कंट्रोल है, यूजफुल है या नहीं है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ठीक कॉस्टिंग मिली या नहीं मिली है, और वेरिएंस एनालिसिस ढंग से हो रहे नहीं हो रहे. सो सी वेरिएंस एनालिसिस इज अ टूल
It's a method, it's a technique, it's a tool in the hand of management to assess performance. It's a control. मैनेजमेंट कंट्रोल कैसे करती है कॉस्ट को? मैनेजमेंट अपने प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे कंट्रोल करती है? विद यूजिंग दिस टूल बजटरी कंट्रोल. बजट से उसकी कॉस्ट बाहर नहीं जाती है. अगर बजट नहीं होगा तो कहीं भी खर्चा कितना भी भागता रहेगा. देयर इज नो कॉस्ट, देयर इज नो स्टैंडर्ड. सो दीज आर द टूल्स बीइंग यूज्ड. अब इनकी इफेक्टिवनेस चेक करनी है. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ठीक है ना, बजटरी कंट्रोल ठीक है या नहीं है. बजटरी कंट्रोल का कैसे पता चलेगा टूल इफेक्टिव है या नहीं है, अप्रोप्रिएट? इफ माय actual cost is exceeding my budgeted cost, that shows my tools are good, being used effectively. और something is being missing in my budgetary control, जो कोई कॉस्ट मैंने कंट्रोल ही नहीं की या एसेस ही नहीं की, उसकी वजह से मेरा one particular cost is exceeding because we didn't set any budget for that. So it means मेरा बजट ही adequate नहीं था. Or some point of time my actual cost is much more than my budgetary cost because the way we budgeted the cost, that was not correct. So all that has to be seen. Cost computation, uske tools kya hai? Costing, job, batch, process, contracts. See, please understand, standard costing is what? Standard costing is mainly related to your setting up the standards, budgets, costs. Okay, we say for one particular product, what should be my standard cost, standard material cost, standard labor cost, standard my overhead. So we set these standards. So don't look at that thing that way कि standard costing में तो variance analysis भी आता है. So when we say standard costing, here we are setting up the standard for a particular component of the cost. Okay, like my per unit material cost, per unit labor cost, these are what? These are my standard cost. Budgeted cost क्या होती है आपकी? Now for one particular material के लिए मैंने एक बजट बनाया है. For my production, this is my budgeted cost. Now I say for my 5,000 units, this is coming out to be my cost. Variance analysis goes more in a deep जब हम actual versus budget को हम compare कर रहे हैं. Okay, so use this in a two different senses. वो अपने costing वाले subject के हिसाब से मत जाओ जिसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपकी वेरिएंस एनालिसिस वो भी जारी है. ओके, एनीवे कॉस्ट रिडक्शन में क्या है? व्हाट आर माय टूल्स? लाइक मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग, लर्निंग, लीन मैन्युफैक्चरिंग, वैल्यू एडेड एनालिसिस, सिक्स सिग्मा. अब ये पता है ये टूल्स हैं. सिक्स सिग्मा आपको पता है नहीं पता है, उसमें हम क्या करते हैं in quality, Six Sigma is used as a very effective tool. या total quality management, उसमें एनालिसिस करते हैं कि कौन से कॉस्ट की वजह से बढ़ रहा है. और एक काम को करने के लिए 10 स्टेप चाहिए, तो क्या हम उसको 8 स्टेप में खत्म कर सकते हैं या 7 स्टेप्स में खत्म कर सकते हैं? ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं? So these are basically my cost reduction tools. So auditor checks on all these tools and then says something, comment on that, ये tools ठीक है या नहीं है. प्राइसिंग डिसीजन मेकिंग में टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, ओके, वेरिएबल एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, टोटल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किससे हो रहा है? हाउ डू यू मैनेज द परफॉर्मेंस? थ्रू द बैलेंस स्कोर कार्ड. पता है ना बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है? बैलेंस स्कोर कार्ड जैसे हमारी वो रिपोर्ट कार्ड बनती है ना स्कूल में, उसी तरीके से बैलेंस स्कोर कार्ड कंपनी का भी है. अब उसमें क्या दिखाते हैं? उसमें फाइनेंशियल का दिखाते हैं, उसमें नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर होते हैं, उसमें कंपनी के क्वालिटेटिव पैरामीटर्स होते हैं. परफॉर्मेंस प्रिज्म में होता है टॉप, मिडिल, मैनेजमेंट. आई मीन दीज आर द डिफरेंट टूल्स बीइंग यूज्ड, okay, for these things. Business intelligence, this may be some software may be used for these things. So performance analysis, so success of performance analysis would depend on how, it will not depend on how many performance analysis are considered. तो जो आप परफॉर्मेंस एनालिसिस करो उसमें ये नहीं है कि आपने कितने मेजर्स इंक्लूड किए, आपने कितने की, आई मीन हाउ मेनी टाइप ऑफ मेजर्स यू हैव इंक्लूडेड, कितने तरीके के आपने एनालिसिस उठा लिए, बट हाउ दे आर इवैल्यूएटेड एंड असेस्ड विद द हेल्प ऑफ वेरियस मैनेजमेंट अकाउंटिंग. आप मेजर तो कर लिए, बट कितने आपने मैनेजमेंट टू अकाउंटिंग टूल्स यूज किए उनको एसेस करने के लिए, उनको चेक करने, इवैल्यूएट करने के लिए.
This is where the success of performance analysis comes. मैंने मेजर तो खूब सारे बना लिए, लेकिन मैं उसको कैसे इवेल्युएट कैसे कर रहा हूँ, मेरे टूल्स क्या यूज कर रहा हूँ और कितने अच्छे से यूज कर रहा हूँ, हाउ इफेक्टिवली दोज आर बीइंग यूज्ड, दैट डिटरमिन्स द सक्सेस ऑफ माय परफॉर्मेंस एनालिसिस. नाउ समथिंग केपीआई, किसी को पता कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है? लाइक क्या है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स? सी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आर दी मेजर्स एंड पैरामीटर्स जिसके ऊपर आपकी परफॉर्मेंस असेस होती है. ओके, सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो कंपनी ना, कंपनी में हैव डिफरेंट टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स. मैन्युफैक्चरिंग एक, प्रोडक्शन है एक, वेल्डिंग है एक, असेंबलिंग है. नाउ वी मे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ असेंबली लाइन फॉर ईच डिपार्टमेंट. See, there is nothing called like there is no better performance analysis. You have to look at the situation. सारी चीजें situation based होती है. You need to look at what is the problem before you. Problem को देख के आपको treatment करना है. You need to look at what type of challenge is in front of you. What type of business is there. तब आपको अपने tools use करने. Some tools are standard जैसे ratio analysis आप use कर सकते हैं. Okay. So key performance indicators क्या है? These are basically the key. I mean जिससे मेरे को परफॉर्मेंस के बारे में इंडिकेट करते हैं. अब हम क्या करते हैं, एक किसी चीज की परफॉर्मेंस may be indicated by a number of factors. Okay, let's say if I talk about the health of somebody may be indicated by his weight. Health of somebody may be indicated by whether how strong is he, how much he can walk, how much he can lift weight. Okay, how fast he can walk. Okay, for how long he can stand. I mean these type of things. But what are the key performance? मैं किससे judge करूंगा? What are the 4-5 things which are important? So those are called key performance indicators. We'll talk about that when we do the performance. Key performance is क्या है? Simple, variable, independent and interdependent. In respect of the goals can be set. अभी जैसे एक मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसका क्या हो सकता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर? Number of units produced per hour or per month or in a year. और क्या हो सकता है? मैंने पर आवर बोला, पर मंथ बोला. एंड देन कॉस्ट कितनी कंट्रोल में की है? Key performance indicator could be like my product total production cost could not exceed some X amount. Productivity, cost, okay, and then speed, rejection. So there can be different KPIs. So it can be quantitative. Quantitative means जो हम numbers में बात कर रहे हैं, financial और non financial. Productivity कितनी होगी? Financial में क्या हो सकता है? Now for let's say for the company, the financial could be it should earn at least 20% net income or 20% gross profit, or return on investment should be at least 25%, something like that. Qualitative means customer complaints मेरे 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, or the all problems should be resolved within 2 hours. I mean that is indicates my actionable, means where it could be influenced by, company could control that. Now trending, जिसमें over a period of time we look at a trend. अब यहाँ पे क्या कहते हैं? Now not more than 3 times it should dip. और trending means जब पे performance के लिए हम क्या कहें, it the I'll say for production department
for next 3 months, the performance should be always rising. It should not dip. और एक बार भी नीचे गिर जाती है, then it is not a good performance indicator. Then the department need to improve. Or there should not be any mistake. There should not be, the rejection level should not be more than 1%. Now, some examples will pick up. Let's say अभी जो हमने discuss किया था financial performance कैसे, segment revenue to total revenue percentage. मेरा segment A का to total revenue कितना होना चाहिए? 10% at least. Segment turnover growth should be at least 5%, something like that. Customer wise sales, top 5 customer, bottom 5 customer sales should be more than 10% or should not be less than 10%. Margin से related क्या हुआ? Gross margin on sales should be some X percentage. Gross margin on segment sales should be 20%. Likewise, productivity and efficiency से related क्या होगा? Material to the total cost, material wastage to the total input, contribution per unit of the material used. Labor में क्या हो सकता है? Production per man hour or production per employee, employee cost to sales. I mean, these are the different, parameters, key performance indicator that we use. Here, अगर मेरे ideal hours to total available hours are more than 10% or should be less than 2%, it means अच्छा काम हो रहा है. Otherwise, there is something wrong that need to be corrected. Complaints, customer complaints to total orders. कितनी देर में कंप्लेंट रिजॉल्व हो रही है? Somebody has problem, not an issue, but we are not. Yes, productivity is another thing. Business growth percentage over the 3 years. ये डेवलपमेंट इंडिकेट करती है कंपनी कहाँ जा रही है. कस्टमर परफॉर्मेंस किससे कैसे बताएगा? कितनी कंप्लेंट बार बार ही आ रही है उसी कस्टमर से, और वैसी कंप्लेंट बार बार ही आ रही है. यार मोबाइल फोन में एक कंप्लेंट बड़ी कॉमन है कि इसमें ना ये हीटअप हो रहा है. So it indicates the product performance, customer performance कितनी अच्छी है. Supplier performance, on time supplies, कितने टाइम से सप्लाई कर रहा है, कितना rejection level है. Likewise. Okay, any questions on this? We are clear about KPIs. It's very important for you to understand. Life में अभी आप लोगों को जैसे आप प्रोफेशन में जाएंगे आप सबके KPIs बनेंगे. इंडिविजुअल के KPIs बनते हैं हर किसी के काम से रिलेटेड. लेट्स से उसको अपनी टैक्स रिटर्न्स कितने टाइम से फाइल करनी है, टाइम से फाइल की या नहीं की, हाउ मेनी टैक्स रिटर्न्स हैड द इश्यूज एक अकाउंटेंट के लिए, दैट मे बी एडेड. सी यू कैन गो टू एनी टेंजेंट, बट मैंने जैसे कहा की you should not see there can be 1 lakh type of, you can go with 10,000 type of parameter, but what are the key one? सबसे important क्या है? वो 3 या 4 के ऊपर बात होती है. Top 5 most important 5 parameter, you need to focus only on that. That is why it is called key performance indicators. Okay, I think, do we have time to take a case study? Anyway, firstly tell me if you have any questions on this. Key performance indicators, something like we have discussed with this. Okay, मैनेजमेंट अकाउंटिंग टूल्स, अभी हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग टूल्स के ऊपर में बात किया. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड पर्पस एंड टूल्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड. सो व्हेन आई टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, don't call link it with the standard costing variance analysis. That is my controlling tool. So any questions related to this? Other we will quickly take up one case study. एक problem solve करते हैं. So let's do one thing. Let's go ahead with this. I think we started a little late today. What do you say? Should we pick up? Can we pick up one problem just now? Okay, just go through this. We'll quickly go ahead with this.
देखो हमें क्या करना है, मटेरियल क्वालिटी वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस एंड स्क्रैप वेरिएंस। अगर कुछ छूट जाता है तो या दिस इज केस स्टडी ओनली बेटा। सो can we go through this quickly and then we'll start come to the point? We'll go for a resolution then. Take 2 minutes to read this. Have you gone through this? So let's start. तो हमें इसमें क्या करना है, मटेरियल क्वालिटी वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस और स्क्रैप वेरिएंस, तीन निकालने हैं हमको। ओके, तो मेरी मटेरियल क्वालिटी वेरिएंस कैसे निकालेंगे? How do we calculate the material quality variance? Let's deduct the what? The actual quantity at a standard rate from actual cost of the material. आप मेरे को can somebody do the calculation for standard cost of the material? स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट करें मटेरियल की? Should I start or you would like to take it up?
अच्छा मेरे को स्टैंडर्ड कॉस्ट बताइए कैसे, क्या क्या इंक्लूड करेंगे उसमें। स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स और द प्रोडक्ट एक्स इज 1200 यूनिट्स। मेरे को 1200 यूनिट्स ऑफ मटेरियल लग रही है, एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर दैट, 60 यूनिट्स। तो मेरी मटेरियल कॉस्ट क्या हो गई, 1200 मल्टीप्लाइड विथ, वेरी गुड, एक्सेलेंट, 72,000 मेरी मटेरियल कॉस्ट हो गई। एंड देन व्हाट वी डू, रिजेक्शंस कितने मेरे, 25% ऑफ द इनपुट, यानी 1200 में से मेरे 25%, कितना आ गया मेरा रिजेक्शन, कितना हो गया, 1200 का 25%, 300 आ गया, ठीक है। अब नाउ व्हाट दे आर सेइंग दैट 1/3 ऑफ द रिजेक्शन कैन बी रिवर्क्ड, 1/3 ऑफ द रिजेक्शन, यानी 300 का 1/3 कितना हो गया, 100, ठीक हो जाएगा, 100 एट एडिशनल कॉस्ट ऑफ 20। तो कितना हो गया, रिवर्क कॉस्ट कितना हो गया मेरा, 100 in 20 100 into 20, वेरी गुड, कितना हो गया, 2000, ओके। 2000 okay Now what it says, the scrap units can be sold at 5 per unit, okay। तो scrap कितना बच गया अभी हमारा, 200 200, ठीक है, 200 into 5 कितना हो गया मेरा, 1000, 1000 ओके, 1000। okay तो वो मेरा स्क्रैप क्या हो गया, इज अ रेवेन्यू और एन एक्सपेंस, revenue रेवेन्यू। तो अब मेरी कॉस्ट कितनी आ गई इसकी, 72,000 क्या आ रहा था मेरा मटेरियल कॉस्ट, करेक्ट, yes प्लस मेरी रीवर्क कॉस्ट कितनी आ गई थी, 2000, कितना हो गया, 74,000 74 minus 100 1000 माइनस 1000, 73,000 हो गया। yes नाउ व्हाट इज द यूनिट कॉस्ट, यूनिट स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रहा हूँ ना, 73 per unit 73 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, yes 73,000 मेरी कॉस्ट आ गई थी, उसको मैंने 1000 से डिवाइड किया, 73 आ गई मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई, ओके। okay नाउ व्हाट इज माय एक्चुअल कॉस्ट, ये मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट आ गई 73, ठीक है ना। yes नाउ व्हाट इज माय एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल 50 कॉस्ट कितनी मेरी 19,500 यूनिट्स बनी है मेरी, yes उसके लिए कितना 24,000 यूनिट यूज हो रहे हैं, yes और उसका रेट कितना है 60 पर यूनिट है, तो मटेरियल कॉस्ट कितनी होगी मेरी, 14 14,40,000, ठीक है, 24,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 60, ठीक है, 14,40,000। इज एवरीबडी क्लियर प्लीज, गुड। yes सो नाउ व्हाट इज माय रीवर्क कॉस्ट, अब यहाँ पे क्या क्या है, 7,000 यूनिट्स वर रिजेक्टेड, आउट ऑफ इट 25,000 यूनिट्स वर रीवर्क्ड एट द कॉस्ट ऑफ 51,000। तो मेरी रीवर्क कॉस्ट कितनी है, 51,000 वो तो दी हुई है, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, स्क्रैप कितने में 5 यूनिट्स पर में जा रहा है। अब मेरी स्क्रैप कॉस्ट कितनी हो गई, स्क्रैप वैल्यू कितनी निकल गई, स्क्रैप कितना बचा अभी मेरा, 7,000 में से 2,000 रीवर्क हो गया, ठीक है, yes 4,500 4,500 एट द रेट ऑफ scrap 5 rupees 5 रुपीज। तो कितना आ गया मेरा, 22,500 वेरी गुड। सो नाउ व्हाट इज माय कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट कितनी होगी मटेरियल की, 22,500 plus 14 lakh total 14,40,000, ठीक है, प्लस 14,40,000 plus 51,000 प्लस 51,000 माइनस 22,500, ओके। 22,500 okay
Is everybody is able to understand calculations? Yes, sir. ठीक है, 14,68,500. Okay. Okay. Now what is my actual cost per unit? 14,68,500 divided by 19,500. How much it comes to? 75 rupees 30 paisa. Okay. Yes. Now what is my material quality variance? हमारा एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट इज 14,68,500. ठीक है, अभी हमारा जो नाउ व्हाट इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी? Standard cost. Because we manufactured 19,500. Okay, multiplied by what was my standard rate? 60. 73. 73. Right, 73. Okay, so how much it comes to? Correct? 14,23,500. So what is my material quality variance? It will be 14,68,500 जो मेरे एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट है माइनस माई 14,23,500 which is my standard cost of actual material. It comes to 45,000. 45,000. This is adverse or favorable? Adverse. Good. क्यों? क्योंकि मेरी एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा आ रही है. So we are looking at a standard cost of my actual material. Okay. Okay. This is my material quality variance. ठीक है, अब मेरे को material usage variance बताओ. अब हमने एक्चुअल मटेरियल कितना यूज किया? 24,000 यूनिट्स. मटेरियल यूसेज तो मैं कैसे करते हैं? स्टैंडर्ड रेट लेंगे. मटेरियल का स्टैंडर्ड रेट क्या है? 60. करेक्ट? Yes. ओके, नाउ टेल मी, अब मैंने मटेरियल कितना यूज किया एक्चुअल? 24,000 यूनिट्स. 24,000 units. अब मेरे को स्टैंडर्ड यूनिट्स कितने यूज करने चाहिए थे? $23,400. ठीक है, Yes. क्योंकि वी हैव टू लुक एट अ प्रोपोर्शन. यहाँ पे मेरे 1200 लग रहे हैं 1000 के पीछे, तो 19,500 के पीछे कितने लगेंगे? 19,500 into 1200 by 1000 divided by 1000. तो इज एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? तो अभी मेरा वेरिएंस कितना है? एक्चुअल मटेरियल यूसेज ज्यादा है स्टैंडर्ड से या कम है? ज्यादा है, 600 ज्यादा है. 600 ज्यादा है. ठीक है, तो मेरा वेरिएंस कितना आ गया? 600 इंटू करेक्ट? 1000. Yes. क्या एडवर्स फेवरेबल? Adverse. करेक्ट है. Yes. चलो अब मेरे को स्क्रैप वेरिएंस बताओ. एक्चुअल स्क्रैप वैल्यू क्या निकाली थी अभी हमने? 22,500. करेक्ट. Yes. अब मेरे को बताओ स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए था मेरा इसके ऊपर? स्क्रैप 19,500 के ऊपर मेरा स्टैंडर्ड स्क्रैप कितना आना चाहिए था? 19,500. ये मेरा प्रोडक्शन है ना 19,500 का. करेक्ट.
Yes. 19,500 के ऊपर मेरा स्क्रैप कितना आना चाहिए था? आई फॉरगॉट योर नेम यार. आप यू आर चेतन? नो. श्रीमंत. श्रीवंत. ओके श्रीवंत, सॉरी. हाँ बोलिए बोलिए बोलिए. कमन गो अहेड. वेरी गुड. सर ऐसा होगा 200 स्क्रैप आ रहा है 1000 यूनिट आउटपुट से स्टैंडर्ड का, तो 19,500 से कितना स्क्रैप आएगा? तो फिर 200 डिवाइड बाय 1000 इंटू 19,500. सर 3900 इंटू 5 रुपीज 19,500. सर तो मेरा 3900 स्टैंडर्ड स्क्रैप कितना होता? 19,500. 19,500. यस. बिकॉज इट इज 200 डिवाइडेड बाय 1000. मेरा 200 का स्क्रैप स्टैंडर्ड है. ओके. यस. तो 19,500 के ऊपर कितना होगा? 200 बाई 1000 इंटू 19,500 3900. ठीक है. यस. नाउ 3900 मल्टीप्लाइड बाय 5 रुपीज. वेरी गुड. कितना आया मेरा अब? ये पहुंच गया 19,500. ठीक है. यस. अब नाउ दिस इज माय स्टैंडर्ड स्क्रैप दैट शुड हैव बीन जनरेटेड. मेरा एक्चुअल स्क्रैप 22,500 है. स्टैंडर्ड स्क्रैप कितना है? 19,500. वेरिएंस कितना निकला? 3000 फेवरेबल है. कितना निकला? 3000 दैट इज फेवरेबल. 22,500 लेस 19,500 इज इक्वल टू 3,000. ये क्या है? फेवरेबल. फेवरेबल एडवर्स? फेवरेबल. इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? यस. यस सर. बिकॉज स्क्रैप इज अ रेवेन्यू. एक्चुअल स्क्रैप की वैल्यू मेरी स्टैंडर्ड स्क्रैप से ज्यादा है. दैट इज व्हाई इट इज अ फेवरेबल वेरिएंस. ओके. यस सर. तो लेट्स डू वन थिंग. अभी थोड़ा सा समय और नहीं है, तो विल पिक अप वन मोर केस स्टडी नेक्स्ट टाइम. एक और है मेरे पास, थोड़ा सा रेशियोज के ऊपर है. विल डू दिस नेक्स्ट टाइम. ओके. यस. In our next class, we have day after tomorrow. Then we'll pick it up. Okay. Any more questions on this, guys? कुछ और है? नो सर. Okay. चलो. Thank you all. थैंक यू सर. तो I'll pick up more case study day after. मेरे में एक और लेके आया था, but आज ज्यादा टाइम मिला नहीं, because शुरू में भी टाइम वेस्ट हो गया. So anyway, we have covered up, with another 5-7 minutes. Not an issue. So we'll take it up day after. Okay. ठीक है. यस सर. Thank you all. थैंक यू सर.